Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to our series Scratch Learn with Fun. Today we are going to have a new lesson and it's all about sense. Yes, how computer sense. This is a question of today's topic. How does computer sense? So when we talk about humans, इंसानों के बारे में अगर हम बात करें तो इंसान किस तरह से डिसीजंस लेता है हाउ डज ह्यूमन रिसीव those instructions. So if we look at the humans, human has five different senses. The Allah Almighty has provided us five different senses, and using those senses our brain takes input and then it takes certain decisions. Let's take the example of all these one by one. तो अगर हम बात करते हैं आई की, जिस सेंस को हम करते हैं, व्हाट डज आई हेल्प्स? आई इज एक्टिंग लाइक अ डिवाइस फॉर अस. आई एक हमारे बॉडी के अंदर एक डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करती है देखने में, टू साइट समथिंग, राइट? अगर कोई चीज़ छोटी है या बड़ी है, ये कौन ब्रेन तक पहुंचाता है? दिस इज आवर आईज आर द वन दैट गिव्स इंफॉर्मेशन टू आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन को फ्लो करेगा वो हमारी आई होती है, जो हमें ये बताती है कि सामने वाली चीज़ छोटी है या बड़ी है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका साइज क्या है. So all this information being delivered to the brain using our eyes. The second one is the hearing. Yes, जब हमें किसी नॉइस की आवाज़ आती है, अगर हमें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो ये ब्रेन तक पहुंचती कैसे है? ब्रेन तो डायरेक्टली इस चीज़ को सेंस नहीं कर सकता. ब्रेन टेक्स द एडवांटेज ऑफ hearing. Yes, तो hearing is the one sense that help us to recognize that the voice is coming in. Is it a good voice or it's a noise? Okay. इसी तरह से we have another sense that is called, yes, give me the name of the sense. What this shape is all about. Yes, it's a nose. And what nose helps us? Nose helps us to smell. Yes, हमें किसी चीज़ की फ्रेगनेंस जो मिलती है वो हम कैसे सेंस करते हैं? यूजिंग अवर नोज. सर्टेन टाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव अ फ्लू और सम अदर प्रॉब्लम्स, तो हमारी इस सेंसिंग कैपेबिलिटी के ऊपर क्या हो जाता है? इट अफेक्ट्स आवर ब्रेन टू नॉट गेट द फ्रेगनेंस. जैसे कि आजकल आप लोगों ने सुना होगा, बीइंग इन द डेज ऑफ दिस कोरोना वायरस, इफ समबडी गेट्स द कोरोना वायरस सिम्टम्स, उसकी स्मेल का सेंस जो है वो फिर काम नहीं कर रहा होता. ही फेल्स टू सेंस सर्टेन थिंग्स. ठीक है, तो उस सेंस की कैपेबिलिटी उस वक्त कम हो जाती है. तो दिस डिवाइस गेट्स अफेक्टेड. हमारी वो डिवाइस अफेक्ट हो जाता है, हमारा वो ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को सेंस नहीं कर पाते, चीज़ों को स्मेल नहीं कर पाते. सो दैट इज द थर्ड सेंस वी ऑलरेडी हैव विद अस. द फोर्थ इज, what is the fourth one? The fourth one is taste. That's a very interesting one because अगर ये taste का सेंस आपके पास अल्लाह ताला नहीं देते तो it would be very difficult for you to decide कि आइसक्रीम अच्छी होती है या ख़राब होती है, right? So this is the sense that helps you to have the feeling. Yes, this makes, it gives you a signal to your brain that something is good in taste, something is sweet, something is sour. All this kind of information is provided to the brain using this sense called taste. Okay. The last one is very much important and it has been not recognized very well. और ये भी एक बहुत बड़ी blessing है. This is called touch, right? अगर आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, if you go to the kitchen and if you find some bowl that has uh, cooked food over there that is recently cooked, if you touch that bowl, you feel the heat, right? It's hot. So this, the feeling of the hotness and the coldness of something is always being given by a touch sense. ये हमारा सेंस है टच का, जो हमें हमारे ब्रेन को ये सिग्नल पास करता है कि कौन सी चीज़ ठंडी है और कौन सी चीज़ गर्म है. तो ये तो बात हो गई ह्यूमंस की. अल्लाह ताला ने तो ह्यूमन को बहुत सारे सेंसेस दिए हैं. ये सेंसेस एक्ट करते हैं एज एन इनपुट इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्रेन टू प्रोसेस सर्टेन थिंग्स. ठीक है, और वो प्रोसेस करने के बाद हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ हेड टू हेड कंपैरिजन विद द कंप्यूटर्स. कंप्यूटर क्या करेंगे? जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर ऑल्सो हैज सम डिवाइसेस जो उसको सिग्नल्स देती है प्रोसेस करने के लिए. जिस तरह हमारे पास ये 5 डिवाइसेस हैं, ये 5 ऑर्गन्स जो हैं, इसको हम डिवाइस भी कह सकते हैं.
और कंप्यूटर के लिए यही ऑर्गन्स की जगह डिवाइसेस की फॉर्म में आ जाती है। तो हमारे पास इसी तरह एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं कीबोर्ड। यस, द कीबोर्ड इज द थिंग जिसे कंप्यूटर सेंस करता है अगर उसको हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी है। इफ वी हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, वी आर गोइंग टू यूज दीज डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड। वी गिव इंस्ट्रक्शन वाया माउस। कीबोर्ड से कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं? अगर आपको कोई अपना ईमेल आईडी एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू गो टू द स्क्रैच, तो आप क्या करोगे? ब्राउजर पे जाओगे, स्क्रैच का वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे। वो एड्रेस कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है? व्हेन यू टाइप ऑन योर कीबोर्ड। इसी तरह इफ यू वांट टू प्ले अ वीडियो ऑन यूट्यूब, आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं माउस को। यू यूज योर माउस और आप जाकर प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर ये सेंस कैसे करता है कि ये वीडियो प्ले करनी है? यूजिंग दिस माउस एज एन इनपुट डिवाइस, राइट? जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो वी यूज अ जॉयस्टिक, एंड जॉयस्टिक हैज डिफरेंट बटन्स। हर बटन का अपना एक फंक्शन होता है। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस फंक्शंस थिंग बिफोर। सो कंप्यूटर में जब आप अपने कर्सर या मूवमेंट की को प्रेस करते हो, तो कंप्यूटर क्या करता है? उसकी एक मूवमेंट क्रिएट करता है। और इसी तरह अगर आप अपने फायर के बटन को क्लिक करते हो तो इट फायर्स। ये चीज़ों की सेंसिबिलिटी कहाँ से आती है? फ्रॉम दिस जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक उसको इंस्ट्रक्शन देती है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और स्क्रीन पे आपको रिजल्ट नजर आ जाता है। इसी तरह इफ वी टेक इट फर्दर मोर टू द नेक्स्ट लेवल, वी हैव मोर इनपुट डिवाइसेस। बिकॉज कंप्यूटर तो बहुत एडवांस मशीन है, इसके साथ हम बहुत सारी कैपेबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली इफ वी गो टू द नेक्स्ट लेयर, यू फिगर आउट देयर इज अ माइक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से यूजिंग एन इंटरनेट, हम कौन से डिवाइस को यूज़ करते हैं? वी यूज़ माइक। इसी तरह इफ यू गो टू सुपर स्टोर, यू विल फिगर इट आउट। जब आप अपनी पूरी ग्रॉसरी खरीद लेते हो तो व्हाट वुड हैपन? यू गो टू द काउंटर, एंड एट द काउंटर साइड you have a barcode machine. So the person takes your stuff and it uses this barcode to detect the price of these items. वो करता क्या है? वो आपकी आइटम को उठाता है। लेट्स से यू पिक सर्टेन सोप, और उस सोप को वो करीब लेके आता है अपने बारकोड मशीन पर, और उस पर एक बारकोड लिखा होता है जिससे वो सेंस करता है कि इसकी प्राइस क्या है, ये क्या चीज़ है, इसका साइज क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कीबोर्ड, अगर मैं सब चीज़ें लिखने बैठूंगा तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो वी यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी टू decode all that information using a barcode. Next is the camera. So camera is also an input device, because if you are sitting or having an online conversation, so your laptop has a webcam, and this is an example of a webcam. तो webcam क्या कर रहा होता है? इनपुट ले रहा होता है आपकी पिक्चर को या आपकी वीडियो को, और वो कहाँ पे भेज रहा होता है प्रोसेस करने के बाद? जिससे आप बात कर रहे होते हैं उस तक पहुंच जाती है। तो ये इनपुट लेता है आपसे, एंड इट गिव्स दैट आउटपुट ऑन स्क्रीन मॉनिटर या एलसीडी के ऊपर। जो रिजल्ट आता है, दैट्स द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर, राइट? आगे और बढ़ते हैं तो यू हैव सीन सर्टेन पैनल्स, बायोमेट्रिक मशीन्स। Maybe you have not used the biometric machine by now, but those are in the universities, they have used the biometric machines. Or if you may have experienced it in the hospitals, in certain offices, the biometric machine takes your thumb impression. अगर आप कभी एटीएम गए हो तो एटीएम में आपने बार ये बायोमेट्रिक मशीन देखी होगी। देयर इज वन सेंसर, इट्स अ टाइप ऑफ सेंसर। ये क्या करेगा? सेंस आपके थंब इंप्रेशन को सेंस करता है, राइट? इसी तरह यहाँ पर एक टैबलेट की पिक्चर भी डली हुई है, एंड देन यू ऑल्सो हैव स्टाइलिस। तो स्टाइलिस आजकल टच राइटिंग पैड्स भी आ रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दोस काइंड ऑफ राइटिंग पैड्स। एंड देन वी हैव अ टच स्क्रीन where we can put in the inputs using the pressure of our fingers. हम अपनी फिंगर से उसको टच करते हैं, कंप्यूटर सेंस कर लेता है, उसके अगेंस्ट चीज़ों को प्रोसेस कर देता है। So these are the two different situations when we have to sense. ह्यूमन सेंस करने के लिए 5 सेंसेस को यूज करते हैं। कंप्यूटर को जब सेंस करना होता है, कोई इनपुट रिसीव करना होता है, तो इट यूज डिफरेंट डिवाइसेस, एंड these devices are great in numbers. So what we are going to do in Scratch, when we talk about Scratch, we have to use two devices. Yes. Number one would be keyboard, and the number two would be mouse. Although certain times maybe we can also use this mic as an input device when we are working with the Scratch. But for now, let's proceed with these two.
the mouse and the keyboard. So how would it work? Let me just get into it and then I will get back to you using Scratch. तो हम Scratch पे जाते हैं और Scratch पे काम करके देखते हैं कि हम अपने कैरेक्टर को कैसे सेंस कराएंगे कोई इनपुट कमांड. So I'm heading over to my Scratch and using the Scratch, let's create something over there, okay? So now I am on Scratch and on the Scratch side, let me create a new project. और इस प्रोजेक्ट में हम टास्क ये परफॉर्म करना चाहते हैं कि आई हैव दिस कैट एंड आई वांट दिस कैट टू सेंस सम इंस्ट्रक्शंस. अब मैं उसको इंस्ट्रक्शन क्या देना चाहता हूँ, लेट मी ब्रिंग सम बैकड्रॉप टू मेक इट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग. Let's say this is the dotted background we have and there is my cat. Now I want कि मैं अपनी कैट को खुद कंट्रोल करूं. अभी तक तो हम उसको कोई कमांड देते थे और उसके अगेंस्ट कैट कोई एक्शन परफॉर्म कर जाती थी, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से इस कैट को मूव कराऊं जब मैं चाहूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव इट एन इंस्ट्रक्शन कि जब मैं क्लिक करूं ग्रीन फ्लैग पे तो आप काम करना स्टार्ट करेंगी. ओके, इट हैज लिसनड इट. नाउ इट्स आस्किंग यू क्या करना है. नाउ if you look at this category, so we have worked with the motions, we have worked with the looks, we have worked with the events and control. There is one we call sensing. Yes, sense अभी हमने डिस्कस किया. अगर कंप्यूटर को कोई चीज सेंस करवानी है तो वी आर गोइंग टू यूज इनपुट डिवाइसेस. तो हम सेंस में जाते हैं और हम यहां पर इसको कहते हैं कि आप सेंस कीजिए कि जब मैं कोई की को प्रेस करूं. ठीक है, तो देयर इफ यू लुक एट दिस देयर इज अ कमांड. यहाँ पे क्या कह रहा है, टचिंग माउस पॉइंटर एंड देयर इज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू. ये ड्रॉप डाउन की जो आइकन बनी हुई है इसका मतलब ये होता है कि इट हैज लॉट मोर इनसाइड. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड एक्सप्लोर व्हाट इज इनसाइड. इसके अंदर क्या क्या है. तो ये मुझे दो चीजें बोल रहा है. ये एक चीज तो कह रहा है आपको कि आप माउस पॉइंटर को टच कर रहे हो या आप एजिस को टच कर रहे हो. तो यहाँ पे तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, मुझे तो कीबोर्ड के थ्रू इसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है ना. तो दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. So I will not use this one. Okay, if you look down, there is another command called key pressed. Okay, good. This is what we were looking for. इसके ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं. Okay, so there we have great number of letters. And ये सारी चीजों को अगर और किया जाए तो ये कहाँ अवेलेबल होती हैं. All these are available on our keyboard, right? So if these are all the keys, those are present on our keyboard. तो अब मैं काम ये करना चाहता हूं कि I want to say it कि अगर मैं अप एरो की प्रेस करूंगा, ठीक है, कि अप एरो प्रेस्ड, अगर ये काम होगा तो क्या करना चाहिए. So we want to make a conditional structure. You guys know already what is the meaning of the conditional structure. So we have to go into controls and I'm going to pick this if block and I have to say if I join this instruction with my conditional block तो मेरी इंस्ट्रक्शन क्या बन जाएगी. if की अप एरो इज प्रेस्ड तो आप एक काम करें. क्या काम करें, दिस इज व्हाट यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन. ये हम सेंस क्रिएट कर रहे हैं. सेंस तो कर लिया, कंप्यूटर ने तो ये सेंस कर लिया कि जब अप एरो की प्रेस होगी तो मुझे कुछ करना है. क्या करना है हमने ये नहीं बताया. सो लेट्स से वी वांटेड टू मूव. ठीक है, हम इसको चाहते हैं कि ये मूव करे. तो मूव करने के लिए वी हैव टू गो इनटू द मोशन. वी हैव एन ऑप्शन टू मूव, राइट. तो वी विल आस्क इट टू टेक 10 steps, move 10 steps. Okay, got it. Okay, if I do like this and let's say if I connect it and with my when clicked flag तो क्या होगा. Let's play it and see it. What does it happen. I have clicked on green flag and now I am pressing my up arrow key. Nothing happens. Why nothing happens over there. Let me see again. No, nothing happens. क्या मसला होगा, ये कुछ कर ही नहीं रहा है जो हम चाह रहे हैं. इट्स नॉट डूइंग इट. अच्छा जी, ये इसलिए नहीं कर रहा है कि वी हैव नॉट आस्क्ड इट कि मेरी कंडीशन को बार बार चेक करो. बिकॉज आई जस्ट सेड मैं क्लिक करूंगा और आप देखना कि अगर आप एरो प्रेस हुआ होगा तो काम कर देना. दिस इज अ सीक्वेंशियल थिंग ना. ठीक है,
एक सीक्वेंस है कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो पहले मुझे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर एवर, कि ये वाला काम हमेशा चेक करते रहो। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। नाउ इफ आई क्लिक अप एरो, ये तो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इफ यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी डिड, हमने बात की थी जब हम पोजीशन के बारे में पढ़ रहे थे कि इफ आई आस्क यू गाइस, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि अगर मैं आपको कहूं खड़े हो जाएं जहां भी आप बैठे हुए हैं एंड टेक 10 स्टेप्स, ठीक है, 10 स्टेप्स लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप एक डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे और खुद से 10 स्टेप किसी एक डायरेक्शन में ले लेंगे। मोस्टली यू विल मूव फॉरवर्ड। तो कंप्यूटर इज डूइंग द सेम थिंग। कंप्यूटर को हमने लिखा तो यह है कि अप एरो की प्रेस करेंगे तो आपने 10 स्टेप्स लेने हैं, बट वी हैव नॉट गिव एनी डायरेक्शन। हमने उसको ये नहीं बोला कि आप जब मैं अप की प्रेस करूंगा तो आप अप डायरेक्शन में मूव करेंगे। वी जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन कि 10 स्टेप्स मूव करो। सो दैट्स द प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑल्सो इन्फॉर्म इट कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, हमें कौन सी कैटेगरी पिक करनी चाहिए? वी शुड गो फॉर द मोशन ब्लॉक। Go back to the motion block, and if you look at there, we have point in direction. This is the instruction, right? So if I click on this, ये मुझे कितना एंगल दिखा रहा है? 90 डिग्री। I don't want to have a 90 डिग्री, मुझे तो इसको अप लेके जाना है ना, तो I am going to make it a 0 डिग्री। तो मैं इसको पॉइंट इन डायरेक्शन पहले बताऊंगा कि जब अप की प्रेस होगी तो आपने किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है? You have to point upward, and then you have to take 10 steps. Now let's do it again. Now I click on my green flag, and when I press up key, it moves upward. Excellent. Now I want to repeat the same task for downward. तो मुझे क्या करना चाहिए? I would need similar kind of instruction set. एक तरीका तो यह है कि हम इसी चीज को रिपीट कर लें, दोबारा से if का ब्लॉक लाएं, उसमें सारी चीजें डालें. Another thing is to be smart, you can have a duplicate. You have to simply right click and then press this duplicate. तो मैंने जब इसको duplicate बना दिया है तो this one was there and this one is going to go within my forever block. और इस बार मैं इसकी वेरिएशन में क्या करूंगा? I have to change my things. Instead of up arrow, I will go with down arrow, and the direction supposed to go this way. Okay, the arrow shows downward. Now let's see it again. अब हम इसको यहाँ पे भिजा देते हैं और फिर से प्ले करते हैं. So if I click up, it goes up. If I click down cursor key, it goes down. Now ये क्या कर रहा है? आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिसीजन ले रहा है. It's working as you say. I think you have got the understanding how we are making it move. इससे पहले हम जितना काम करवा रहे थे वो हम एक इंस्ट्रक्शन देते थे, एक फ्लो बनाते थे और बैठ के देखते थे. Now we are doing an interactive thing. Let's add two more things along with it. So I'm going to duplicate these two blocks और इस बार मैं इसको कहूंगा कि जब मैं राइट एरो की प्रेस करूंगा तो आपने जाना है राइट डायरेक्शन में, और जब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो आपने जाना है लेफ्ट डायरेक्शन में. Cool. So let me add these two blocks also underneath it. तो अब मेरे पास 4 ब्लॉक्स बन गए हैं, right? I have 4 different blocks. There are 4 different conditional instruction. जब भी जो कंडीशन ट्रू होगी मेरा कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म कर देगा. So if I play it now I'm going up, going down, going right, going left. So now the cat is moving in all 4 directions. यहाँ पे कुछ चीजें और है जो हमें एडजस्ट करनी है. Those we will be doing when we are going to have our online live session. Okay, so you guys have to try this out and then you have to perform an assignment. Assignment क्या है? Let me quickly get you towards the assignment. So the assignment we have is you have to do 2 things. Number 1 would be you have to make computer sense using arrow and cursor keys to make a character move in different direction. Okay, ये वाला काम तो मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है? This is what has been done.
Now, the part 2 you have to do is you should have two characters on screen. Part 1 जो मैंने आपको कराया, you have to do the practice. You have to practice it, make it happen. इसको टेस्ट कीजिए. सेकेंड असाइनमेंट, उसके अंदर आपने अमेंडमेंट करनी है कि यू हैव टू ब्रिंग अनदर कैरेक्टर एंड यू हैव टू लिंक इट अप विद द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग जो पहले हम पढ़ चुके हैं. आपने उसके साथ इसको लिंक करना है. तो यू शुड हैव टू कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे दो कैरेक्टर्स होंगे. वन शुड ग्लाइड. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइड. एंड इट शुड ग्लाइड रैंडमली. रैंडमली उसने ग्लाइड करना है स्क्रीन के ऊपर. करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है. और जब कभी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर आएगा कि व्हेन इट and one sorry randomly on screen, and one should be controlled with your command using arrow keys. It means you are going to have two characters. एक कैरेक्टर randomly स्क्रीन पे मूव करता रहेगा, दूसरा कैरेक्टर आपकी एरो की से कंट्रोल होगा. अब आपने करना यह है कि जब आपका कैरेक्टर जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं अगर वो टच कर जाता है रैंडमली मूविंग कैरेक्टर के साथ, तो होना ये चाहिए जो रैंडमली मूविंग कैरेक्टर है उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए. So you have to make a sequential instructions, and you also have to have one conditional statement that will be checking when these two characters touch together, it's going to make an action, and the action would be to change the color of the character. ठीक है. तो इसके अंदर आपने लूप भी यूज करना है. And you are going to use all three structures. You have to use sequential structure, you have to bring in conditional structure, and obviously you have to use the loops. Okay, so good luck with the assignment. Try this out, and we are going to connect on 12 o'clock. Thank you very much.